Good afternoon, everyone. Welcome to our roundtable discussion on the role of travel industry in supporting green tourism. As the world becomes increasingly aware of the environmental impact of travel, it is important for the travel industry to take responsibility and play a crucial role in promoting sustainable and eco-friendly practices in the tourism sector. Today, we have gathered experts and leaders from the travel industry to discuss the current state of green tourism and how the industry can work towards preserving our planet while still providing memorable travel experiences for tourists. Together, we will be exploring the challenges, opportunities, and best practices for promoting green tourism through the lens of the travel industry. Our esteemed panelists include Mr. Tejas Singh Kapoor, Program Officer, Center for Environmental Law, WWF India, Ms. Ishita Khanna, Founder and Director of Spiti Ecosphere, and Mr. Hira, Joint Secretary, Himachal Pradesh Travel Agents Association, Manali. I welcome you all to the panel discussion today. Thanks for taking out time to be a part of it. So let's get started now. We hope this discussion will inspire meaningful actions and collaborations towards a more sustainable future for the tourism industry. Our editors, Ruchika and Shweta, are also with us. Over to you both. Thank you, Nancy. Thank you. So, tourism, without a doubt, is a huge industry. The revenues are projected to touch about $927 billion this year, and the industry is expected to exhibit a compounded annual growth rate of 3.47% over the next 4 years. Now, this 3.47% sounds like a small number, but when we consider the global economic growth rate of about 2.5%, and the fact that it contributed 10%, more than 10% to the global GDP before the pandemic, the numbers fall into perspective. However, the traditional impression of tourism, etched with images of overpopulated beaches and crowded hotels, is fading. And we're witnessing the ascent of ecotourism, a philosophy of responsible exploration that celebrates travel and environmental stewardship in equal measure. As we start this eco-friendly journey, an important question comes up. Who leads the way in making tourism better for the environment? What should the travel industry do to promote responsible exploration, or in other words, green tourism? So without any further delay, let's begin with our session. I'd like to begin with Ishita, since you're directly involved with the travel industry and ecotourism. What do you think? I'd like to begin with what are the problems or challenges associated with promoting green tourism? See, I mean, there are lots of challenges. Thank you for starters for inviting me for this session. And yes, Spiti Ecosphere, I'm one of the founders. We've been working in Spiti for now about 20 odd years. And our back then, 20 years ago, that was the model on which we wanted to kind of like develop tourism in the area as well, because Spiti only opened up to the outside world in about the mid-90s. So there were very few tourists coming into the area. So we've been talking about responsible, sustainable, green, eco, all these different words are there now since then, and trying to work on creating livelihoods for local communities, as well as looking at other negative aspects of tourism as well, and how those can be addressed. Of course, there is a lot of challenges. I am glad that the government of India now has taken this up as a theme, where they're talking about sustainable tourism. But it has to be done very mindfully and carefully, because what I found is when the government starts pushing certain things, unless there is a proper way of, actually checking whether the travel operator or what people are claiming to be sustainable, there has to be some kind of a way that for sure that this is what is actually getting translated on the ground. So I think that will be one of the biggest challenges going forward, because though we are talking about sustainable travel, what is it? It's very important to educate firstly the travel operators as well as the travelers as to what is sustainable travel. So I think that's going to be one of the biggest challenges, and also having a way of actually measuring, okay, this is a sustainable travel company. Because otherwise, beach mein there was this trend where everyone was talking about ecotourism, so then everyone claimed to be in, eco travel company, so that is, I think, one of the challenges going forward, which
we need to look at and we need to find ways of addressing. Tejas, can you add your perspective? Yeah, so I totally Yes. agree with Ishita that there are several policies that the government is coming forward with, such as the life for travel for life, and where they're adding indicators for sustainable tourism. But then the entire idea is again on the implementation aspect of those indicators and whether those providers are actually matching to those indicators and are actually on ground, sustainable. That is definitely one thing that I agree with Ishita, and as well as the education aspect and educating the travelers, educating the operators, etc. And sorry, is it audible now? So as I was saying, I completely agree with Ishita. There are several initiatives that are being undertaken, and one of the main issues that I feel is the incentivization. So there is no real incentivization for the people in the tourism industry to really move towards a sustainable tourism aspect. And the only incentivization right now is, because we need to look at from an economical point of view as well. And it needs to be economically viable for the tourism industry. And there is a huge need to push towards incentivization towards moving towards. And one of those incentivizations, as the policy that was earlier mentioning, is the creating a criteria, sustainable tourism indicator. And if the people are aware of these indicators and that there is such a thing as known as sustainable tourism, and you have these certifications, and you have a bronze tier, you have a silver tier, you have a gold tier. So if this is really mainstream, and this will show, this will at the same time create a, that the people in the tourists itself are well aware of these indicators, and that, okay, if this is a gold tier, then this is something that I should go for. And something that was similarly very well implemented was that when it comes to energy conservation, where you have these standards, you have these certification standards for appliances. And when there's a consumer looking to purchase a fridge or an air conditioner, we're able to see the star rating of the appliance and how much of it is, how much energy it is able to conserve. So it's a similar process is adopted for both, even in sustainable tourism, where there is a clear certification of what standard of sustainable tourism that a certain hotel or a guide or operator provides, then it will be really helpful for both in terms, it will be helpful for the tourists in their decision making and coming and deciding what exactly they need to, who they should approach and what hotel they should stay in, etc. So this standardization, I feel, is something that would be really helpful in tackling the challenge of, both education point of view as well as incentivization. Right. Okay. हीरालाल जी, आपसे भी पूछना है, क्योंकि आप तो हिमाचल में हैं और इतने टूरिस्ट वहां आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हम लोग ग्रीन टूरिज्म की बातें करते हैं, ये तो हिमाचल जैसी जगहों के लिए और जरूरी है, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि हिमाचल जैसी जो जगहें हैं, ये इनका जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो बरकरार रहे, या जो भी वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे और ट्रैवल इंडस्ट्री को भी फायदा हो? मैम देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है उसके लिए मुझे लग रहा है कि मनाली शायद एक बेस्ट एग्जांपल है जी। अगर हम या टूरिज्म की बात करें, जो ग्रीन टूरिज्म के लिहाज से बाकी जगह के टूरिज्म का कंसेप्ट कुछ भी तरह का हो सर, बट यहाँ का मैक्सिमम ग्रीन टूरिज्म पर ही है। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारी पॉलिसीज बना रखी होती है, बट जो सबसे बड़ा रीजन आता है उसको इम्प्लीमेंट कराने का। जैसे एनजीटी ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको इम्प्लीमेंट कराने में शायद हो सकता है कि हम लोगों को या फिर जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हमें एज एन प्रेशर ग्रुप काम करना पड़ेगा, या फिर पॉलिसीज हम लोगों को एडवाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे हम लोग जुड़े होते हैं, हम कस्टमर से भी डायरेक्टली मतलब जुड़े होते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करें, तो हम लोग ज्यादा बेटर जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी बनी होती है, बट मेन रीजन है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अब जैसे आज की डेट में एनजीटी का ही एग्जांपल लें, तो यहाँ पर एनजीटी ने रूल्स बहुत बना रखे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे जब देखते हैं हम, तो जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिल्डिंग्स है, कोई उसमें वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाया जाए।
तो एक बेटर जो यहाँ का इकोसिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सकता है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे, इवन जो स्ट्रक्चर्स है उसके लिए एक स्पेसिफिक डिजाइन मॉडल्स होने चाहिए कि ये इस तरह की डिजाइनिंग होगी, इतने फ्लोर्स होंगे, और मतलब जो भी एक बेसिक क्राइटेरिया रखा होता है वो चीजें होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है कि अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा बन रही है कि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमें लग रहा है कि नेचर से ज्यादा यहाँ पे हमें कंक्रीट जंगल ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज को शायद पॉलिसीज इस तरह की बननी चाहिए कि कोई एक रोक लग जाए। अब देखो, हम लोग ऑलरेडी अपने स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, हम लोग होटल चला रहे हैं, बट हम लोगों को इनिशिएटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इस चीज को स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ही रहेंगे तो हमारी ग्रीनरी, जो हमारा टूरिज्म का जो पार्ट है, मतलब जिस चीज के लिए लोग आ रहे हैं, अगर वो चीज ही नहीं होगी तो यहाँ पे कंक्रीट जंगल देखने तो नहीं आएंगे। तो इसलिए पॉलिसीज शुड बी मेड इन दैट वे कि भाई अब एक लिमिटेशन की जाए, एक मतलब स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ओर से एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाए कि ये चीज अब इस कंसेप्ट में चलेगी। अदरवाइज यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये पूरा एग्जॉस्ट होने वाला है। और ये तो चलिए कंस्ट्रक्शन पार्ट पे हम मान के चल रहे हैं। सेकंड जो चीज है, जैसे अब गाड़ियां इतनी डेली यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल आते हैं। आज की डेट में भी मुझे लग रहा है कि मनाली में 40 से 50% आज की ऑक्यूपेंसी है पूरे मनाली की। तो यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका भी 50% होना बहुत बड़ा होता है। ऑनलाइन आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब टूरिज्म डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे अगर एक रिजॉर्ट में, हमारे पास होटल में अगर 5 रूम भी लगे होंगे तो वो थाउजेंड्स में अकाउंटिंग चली जाती है। तो इसलिए एक जो सेकंड चीज जो है इस चीज को मेंटेन करने के लिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाए। चलो, दूर से जो ट्रेवलर आ रहे हैं यहाँ तक आ जाए एनी हाउ, बट यहाँ पे सराउंडिंग में जो साइट सीन है उसको बैलेंस बनाने के लिए, ताकि कुछ कुछ तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ चीज मतलब सब वो करें। तो वहाँ यहाँ पे यहाँ के लोकल व्हीकल्स जो स्पेशली शायद इलेक्ट्रिक होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरह की चीजों को स्टार्ट किया जाए तो एक सिस्टम शायद काफी हद तक हम इसको मतलब सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वही जैसे अपने तेजस सर बता रहे थे कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड बनने चाहिए हर एक चीज में, चाहे वो ट्रेवल का हो, होटल का हो, लॉजेस हो, अपने कॉटेजेस हो, कुछ भी हो। मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज जब स्टार्ट हो रही है तो वो इतनी रैपिडली हो रही है, इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल्स के नाम पे कर रहे हैं, बट कंस्ट्रक्शन इतनी रैपिडली हो रही है कि कोई रूल्स को कोई फॉलो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इन चीजों को बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन किया जाए कि इस एरिया में पर्टिकुलरली ये क्राइटेरिया ही रहना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ के इकोसिस्टम को शायद बनाए रख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग खुद ये फेस कर रहे हैं कि बहुत ही मतलब एग्जॉस्ट हो रही है यहाँ पे चीजें, बहुत ही कंजेशन हो रहा है। सेकेंडली क्या है कि नए पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों को, या फिर जो भी है जहाँ पे भी जो भी डेस्टिनेशन है जो ग्रीन टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, उनको नए डेस्टिनेशन प्रमोट करने पड़ेंगे। अदरवाइज कंजेशन, ह्यूमन कंजेशन या फिर व्हीकल का कंजेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि वो एरिया उस चीज को मतलब उसको सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है वहां पे, चाहे पॉल्यूशन के उससे हो या कोई भी चीज उसमें मेंटेन करनी मुश्किल हो रही है। तो अगर नए एरियाज आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो क्राउड है वो इधर उधर मतलब बढ़ जाएगा। तो ये भी एक वे हो सकता है। बाकी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को फील कराना पड़ेगा कि ये आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। टूरिस्ट को एजुकेट कराना पड़ेगा। ये हम लोग ये मिडल मैन का काम कर सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट हमारे पास आएगा, हम आगे भेजते हैं। तो ये सारी चीजें शायद एक वही है कि एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, शायद उससे बेटर एक रिजल्ट निकले। तो that's it. हीरालाल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ मुझे जी, लगता है कि ग्रीन टूरिज्म को सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोकल इकोनॉमीज को भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है वो बहुत हम्म, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लद्दाख देखें तो वहां पे जो रूरल टूरिज्म है वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे रूरल विलेज कमिटीज हैं जिसमें कि बिल्कुल वहीं के लोग, कम्युनिटीज जो है अपना रिजॉर्ट से अपने, यहाँ पे क्या होता है हिमाचल उत्तराखंड में बाहर से आके लोग अपना एक मतलब बिल्कुल 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 बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज के बारे में वी कैन स्टार्ट विद इशिता अगेन. What do you have to say about the local community being involved and restructuring of the local economy to boost green tourism? Yeah, I mean, it's a very important role, obviously, that local communities have to be involved.
you know, and like you rightfully said, in Ladakh as well, and even in a lot of places in Himachal, actually locals पे मतलब पहले से ही मतलब कि गवर्नमेंट ने रोक तो रखा ही है, बिकॉज आउटसाइडर्स आर कमिंग इन, लीज पे ले रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जैसे हीरा लाल जी ने बोला, मनाली की तो मतलब बहुत ही ज्यादा कंक्रीट जंगल टाइप का बन गया है वहां पर। तो इट इज एंड मनाली एंड शिमला दो मतलब मेन डेस्टिनेशन हैं हिमाचल में। उनसे हमें बहुत सीखने को मिल सकता है एक्चुअली, कि मतलब हाउ कैन वी, बिकॉज इन अदर प्लेसेस दैट टूरिज्म इज नाउ स्प्रेडिंग टू, हाउ कैन वी इंश्योर दैट ऐसे टाइप का मतलब कंक्रीट जंगल ना बन जाए। क्योंकि मनाली इतना ही, शिमला तो मतलब आई डोंट सी व्हाई एनीवन वांट्स टू गो टू शिमला एनीमोर, मतलब वहां पर तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया है शिमला। एंड इट इज बैड फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो, बिकॉज उनका भी शहर बर्बाद हो गया जो इतना सुंदर शहर हुआ करता था। तो बट टूरिज्म ऐसी चीज है, जब अब जो है स्पेशली विद बढ़ावा रूरल टूरिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, इज गोइंग मोर इनटू लाइक द रिमोट एरियाज ऑफ हिमाचल, एंड दैट हैज मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब प्रोज ये है कि मतलब वहां पर लाइवलीहुड्स बढ़ सकती हैं वहां पर लोकल्स की, बट ये है कि वहां पर सारा वो जो टूरिज्म के साथ जो नेगेटिव्स आते हैं वो भी वहां पर फैल सकता है और फैल रहा भी है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जैसे both the other participants said, that it's important that some checks and balances are put into place at the government level, which are enforced, and that can be enforced only by the local guys, because it is their place, तो उनको भी बुरा लगता है जब अपनी ही जगह जो है खराब हो रही है। तो लोकल इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यू नो बट आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, लोकल इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट के थोड़े पॉलिसीज हों। अब जैसे मैं अगर स्पीति का एग्जांपल देती हूँ, तो काजा में जो है वहां कोई ढंग का पॉलिसी ही नहीं है कि मतलब होटल्स किस हिसाब से बनने चाहिए, यू नो उनमें क्या क्या मतलब वेस्ट का क्या सिस्टम है, उनमें क्या होना चाहिए, सूरज का क्या सिस्टम है, कितने मंजिल के बन सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो आपने बनाना है बना लो। जैसे ले शहर में तो लार्ज एक्सटेंट दे हैव टू मेंटेन द लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल, सो एटलीस्ट थिंग्स लुक इन सिमिलर आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी। बट यहाँ स्पीति में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, so it's a combination, and a lot of the hotels that are coming up is by local people, so they're building those same kind of hotels that you will find in Manali or Shimla, because उनको ये समझ है कि मतलब this is what the traveler wants. But I think बहुत जरूरी है कि there is a certain level of policy which then informs and also ensures that the kind of construction that is happening in a place is according to that area's architecture or look and feel, and so it's a combination, I feel, government and locals together. Okay, great. I think Mr. Thakur has also joined us. Nancy, if you could please introduce our speaker. Yeah. So welcome, Mr. Budhi Prakash Thakur, and he's the president and owner of Sarthak Resorts and Hotels. Welcome, sir, to the discussion. नमस्कार मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा आधा घंटा लगेगा, पर मैं जस्ट लिसन करूंगा, फिर बाद में ज्वाइन कर लूंगा आपको। Okay, sure. Okay, thank you. So Tejas, like they rightly said, and you've also said that incentives and there should be best practices to honi chahiye, but there should be implementation at the ground level. So again, my question to you is, how important is the local community's involvement in not just the green tourism or the sustainable tourism part, but also economic restructuring of that particular state or city, so that it becomes a wholesome, it becomes a complete circle, which is good both for the economy as well as for the sustainability, the environment. Yeah, so Ishita extremely rightly said about how the local people are actually the ones who are more concerned about ensuring the ecological balance of their own region. And so their involvement is extremely, extremely important. And when it comes from an economical point of view, it is the local people are honestly would, most places that I visit are very happy with the inflow of tourism because it really helps them economically. And in some places, for example, if it is tourism around a wildlife sanctuary, national park, a lot of them are in fact switching from, say, illegal poaching to becoming tour guides. So it is in fact even helping from that point of view, where they're moving away from some sort of illegal activity and moving towards a legal activity because they find it more economically beneficial.
again, Hira Lalji was mentioning about finding different areas to push tourism away from these heavy tourism areas. But at the same time, there needs to be a checks and balance in the sense that a study needs to be conducted of that region, a carrying capacity study of that region which we are trying to push towards, tourism towards, and ensure that before we push for tourism in those certain areas, whether those areas are even capable or prepared to intake the tourism inflow, right? To ensure that the waste management aspects are taken care of, water, energy, all of these things like checks and balances need to be taken care of when we are pushing towards moving tourism to a new region. So even if we need to ensure that the locals there are prepared for the tourism inflow. So all of these checks and balances need to be taken care of prior to pushing for tourism in the area. Right. Great. Thanks. Shweta, back to you. Yes. I actually, although both of you, Tejas and Hira Lalji, made relevant points because it really struck me that we need to find new destinations because a single place, say like a Shimla or a Manali, I mean, Shimla, Manali, Mussoorie, these places have been, tourism hubs for since decades. And now new ones are coming up. Although it is important, but yes, they just made a relevant point that we also need to do an analysis of the new places where we are trying to push the tourism. For example, we had this, there was a lot of discourse around Lakshadweep, and we were discussing in our team that it's such a pristine place with such a delicate ecological balance. And is it even ready to handle that kind of massive inflow of tourists? So, what I was saying that we have so many tourists in India and people coming from abroad. I don't think it's possible to stop that inflow, and I don't think it's probably the wisest thing to do. So how can we utilize the kind of capacity we have or the kind of potential we have, I hope I'm making myself clear, because in India we have multiple destinations. We have, mountains, we have cultural destinations, and we have beaches, all of that. So I think Nancy had mentioned in her questions also that how can we educate the travelers? What is the best way to actually reach out to the travelers and make them conscious? Because unless it is actually at the end of the day, the people who need to be receptive of the idea of green tourism and ecotourism. So, what are the best ways? Of course, media is there, but what else can be done? How can they be made aware and sensitive to their traveling practices? Yes, anyone can go first. We can begin with Hira Lalji. आपसे शुरू करते हैं. हाँ जी मैम प्लीज. हाँ, लोगों को कैसे समझाएं? मैम देखो, इसका तो सबसे पहला रीजन होता है जब कोई बंदा घूमने जाता है तो ऑब्वियसली ही अप्रोच सम ट्रेवल एजेंट और कोई सोर्स जिसके थ्रू. सो जब वो इस तरह की अप्रोच करता है तो हमें उस वक्त ही उसको एक हो सकता है हम नोट्स बना के या फिर डूज एंड डू नॉट्स का एक लिस्टिंग करके उस तरह से भी हम हर एक डेस्टिनेशन की अलग से वो रहती है, तो हम क्यों ना एक आइटनरी बनाते हुए उस चीज को वहां पे फर्स्ट तो वही प्रोसेस हो सकता है ताकि उसके माइंड में ये रहे कि इस एरिया में अगर मैं जा रहा हूँ तो इसको यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे चलना पड़ेगा. तो फर्स्ट अप्रोच तो हम उसी तरह से बोल सकते हैं कि क्योंकि कोई भी टूरिस्ट है वो ज्यादा देर तक हमारे साथ टच में रहेगा अनलेस एंड पहले जब तक उसका पैकेज कंफर्म नहीं होता है. तो उसके बाद तो वो जब वहां पे जा चुका होगा था मतलब घूमने के बाद तो उसका कोई हमारे साथ लिंक रहता नहीं है. इसलिए फर्स्ट जब हम उसको अप्रोच करते हैं उसी वक्त हम उसको ट्राई मतलब हम एजुकेट करने की ट्राई करें कि भाई अगर आप इस एरिया में जा रहे हैं तो दीज आर द थिंग्स टू डू एंड नॉट टू डू. तो एक तो वो सिस्टम रह सकता है. सेकेंडली फिर जो आप ये बता रहे हैं कि जहाँ पे घूमने जा रहे हैं वहाँ के जो लोकल्स है उसकी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करवाई जाए. उसके लिए तो हम जैसे हर एक जगह पे कोई बॉडी रहेगी आपकी जैसे पंचायत होगी या फिर कमेटीज होती है म्यूनिसिपल कमेटीज उस पर्टिकुलर एरिया की जो कमेटीज है उनके थ्रू हम कोई अपने मतलब अपने लेवल पे वहाँ की टर्म कंडीशन सिचुएशंस क्लाइमेट सब चीज को ध्यान रखते हुए अपनी खुद की पॉलिसीज बना के वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. जिसके हो सकता है हम छोटे छोटे ब्रोशर्स बना के रखें कि कहीं पे असिस्ट कर रहे हैं मतलब साथ साथ में अपनी प्रमोशन भी कर रहे हैं. मान लीजिए मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ मेरे पास ब्रोशर्स हो साथ में एडवर्टीजमेंट भी हो रही है और
वहाँ के जो टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने, उनको वहाँ आके भी हम वो कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे अलाउड है, ये नहीं है, इस चीज़ को आप इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो लोकल्स की बात है, उनको तो फिर खुद से अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे ऊपर किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने लेवल पे भी कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। और इसके लिए सीरियस वही लोग होंगे जो वहाँ के एग्जैक्ट लोकल्स होंगे। अदरवाइज आउटसाइडर्स क्या है, उनको पता है कि मैं 1 साल के लिए लीज है, 2-3 के लिए यहाँ से बिजनेस लेके वहां से, वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जितना वहाँ का एक टिपिकल लोकल जो रेजिडेंट है वो हो सकता है। तो इसलिए उनको तो ऑटोमेटिकली देखो हमें अवेयर खुद से ही होना पड़ेगा। तो कोई चीज अगर इम्प्लीमेंट तभी अच्छे से हो सकती है जब हम खुद से इंटरेस्ट उसमें लेंगे। अगर कोई ऊपर हमारे ऊपर थोप रहा है तो हम उसको एक रूल समझ के लेके चलना चालू करते हैं। तो यहाँ पे तो एक हमारी अपनी कॉन्शियस जो है, अपनी जो मतलब खुद से ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, या फिर लोकल्स को, कि भाई क्या किस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो that's it. Tejas, what do you have to say? I mean, at the end of the day, we need to convince the traveler as well to adopt responsible travel practices. So how do we go about that? Yeah. So this is honestly, I think, the biggest challenge in when it comes to any sort of aspect of law or policy. I always speak from a law and policy point of view, and behavioral change, bringing about a change in behavior of the masses is extremely difficult in policy, and that is one of the biggest hurdles. Because changing a person's behavior is very dependent on person to person. There is no one incentive that will push an individual towards changing their behavior. So it all comes from, like, as Hira was saying, wo andar se aata hai. So for example, there's somebody I know who travels to Tirthan regularly, and he ensures that every single piece of waste that he's utilizing there, he brings it back and then he segregates it there. He ensures that there is no waste left over there. At the same time, even if there are, say, signboards kept about what to do, what not to do, there's like do not litter here, blah, blah, you'll find waste littered at the bottom of the signboard. So it is extremely difficult, and honestly, I do not have an answer of how we can, through policy, law and policy, create awareness. The only way possible is creating awareness and showing what are the harmful impacts of their leaving waste behind, or their harmful practices, and how sustainable practices are much more helpful. It is just creating a mass awareness campaign and ensuring that people realize. And again, I'll push back to that in that criteria, that creating a sustainable tourism criteria where you have certification. So if the person, like, as soon as they're trying to plan a trip and they see that, okay, this area is certified as bronze or silver or gold certification when it comes to sustainable tourism, maybe I'll opt for that position. It is just something that has to be ingrained into the people. And through policy, it is, again, like I said, it's an extremely difficult challenge. I want to add something here. I think, don't you think, Ishita, there should be, stringent laws in place, some kind of punitive action, punishments or fines, Yeah, so that's what I was, Yes. sorry, go ahead, yeah. Yes, that's my question. So what's your No, see, point? there are broadly there are two types of travelers. One is already educated, conscious कि मुझे Right. कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना है, I'm looking for a dustbin, XYZ, ठीक है? The other is the tourist who doesn't, मैं छुट्टी पे आया हूँ, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो मौज मस्ती करनी है, you know? So we have to cater to both these kind of tourists and figure out कि the conscious traveler is already looking for these kind of things and how can they reduce and all. But uska jo percentage hai, at least in my experience, I might not be accurate about it, but in India, the percentage of those are very minimum. You know, the foreigners, especially the Europeans that will come in, they will even email us and say कि भाई आप हमें बताओ, should we get biodegradable toilet paper, biodegradable soap? You know, even we are not so conscious, as them. So those travelers are not the problem, but for them, then you need those kind of facilities also in place. I mean, there should be those dustbins there. So it's kind of like it's a combination again. If you're asking travelers to be more conscious and green, what are the facilities that we're providing them as well? Is that facility being actually properly managed? डस्टबिन तो आपने लगा दिया, उसमें कूड़ा उठा के कोई लेके कहीं जाता है या फिर नदी में ही जाके फेंक देते हैं. So just for on the surface वाला जो मतलब there's no point to that. There has to be a proper system, a back-end system also in place, right? And a proper recycling way, and
in that. And then of course, yeah, you need to have like for a lot of Indian travelers and Indians in general, all of us, कि जब तक डंडा नहीं लगेगा, जब तक फाइन नहीं लगेगा, तो हम सुनते नहीं है, True. यू नो। और जैसे ही मतलब कि अगर अच्छा वहां पुलिस वाला नहीं है, वहां कोई खड़ा नहीं है, यू नो, तो चलो फेंक दो यार, यहीं फेंक दो, you know. So that's where the role of the local community comes in. They have to be like the watchdogs, you know, of their own destination, you know. And so that is important. One is danda, or then you provide an incentive, you know. And incentive also works very well. Like I recently heard that, you know, there's a system in Kedarnath which they've started, you know. So the amount of garbage that's going in or something like that, there's a certain number, there's a certain sticker which is put on each bottle or each can or, you know, tetra pack going in. And agar aap usko वापस करो, they take a deposit, you know, per bottle. Whoever is selling it puts a certain deposit on it, you know. And then if you bring the bottle back, you'll get that deposit back, you know. आपको 10 रुपए वापस मिल जाएंगे, 1 रुपए वापस मिल जाएगा आपको, राइट। तो उस 1 रुपए को नहीं लूज करने के लिए वो बंदा टूरिस्ट वापस ले आता है, इवन इफ इज नॉट कॉन्शियस एंड ही थ्रोज इट, द रैग पिकर दैट गेट्स इट, you know, will come and collect it and bring it back. So I think that kind of system, if it, I was quite impressed, you know. Okay, Kedarnath is like it's in a certain geographical area, you know, so it's easy to monitor. But even in a place like Manali or Kaza, if we can get something like this going, you know, it's great. You know, even if the tourist is not conscious, aapka jo, you know, there are other, even locals, if they see a bottle and there's a sticker there, so collect karko, bacche will also come and collect it, and, you know, unko 1 rupee mil jaye, to kaun nahi khush hoga usse, you know. Absolutely. So I think, you know, incentive, fines, you know, fines में आप कितना मतलब पीछे पड़ोगे, झगड़ा करोगे, you know, that is also one of the issues that one faces, you know. And so yeah, so I think it, again, like I believe in, like, you know, it has to be like an effort from all parties, the tour operators, the travelers, the government, the local community, you know. It has to be done kind of like in a, you know, combined way. Right. I wanted to just ask a slightly different question. In your personal opinion, is there any place which you think is doing it right, you know, the travel part, or handling its tourists, or probably maintaining its biodiversity? There are many examples, I'm sure, but anything that comes to your mind where we can learn from? Could be in India, could be abroad. Nancy, even you can answer Yeah, this I've always one. heard about the Bhutan model, you know, but I've never visited there, so I don't know practically on the ground how well it works. So yeah, apart from that, I can't really say where it's really working. Everything So holistically. Sikkim happens to be one of those places. It's the only organic state. I was discussing it with Shweta earlier also. And what they do is that they have gotten into sustainable practices for the agriculture and food production, and that has also attracted a lot of tourism. And they are themselves, the local communities, completely involved in, you know, raising awareness and keeping their environment clean. So again, the question is that, you know, what does the person who's traveling, the traveler, whether he's going to, you know, follow those rules or not, it is up to them only now. Yeah, so Shweta, your question? No, this Your was question. You can come back. You can come back to your question, and maybe Tejas Yes. and Hira can, you know, add. tell. Tejas, can you think of? Yeah, I cannot think of it. I'm on the same level. हीरालाल जी, आपकी नजर में कोई ऐसी जगह आपको अगर ध्यान में आती हो, जहां आपने विजिट किया हो या सुना हो, जिसने एक्चुअली अपने टूरिज्म को बहुत बैलेंस्ड तरीके से मैनेज किया, यूज भी, जैसे इशिता ने एग्जांपल दिया भूटान का, तो नहीं, अभी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट इन चीज़ों को ना, मुझे जो मेरे माइंड में लगता है कि इम्प्लीमेंट करवाने के लिए शायद एक, जैसे हर एक इंडस्ट्री में देखो एक ओम्बड्समैन होता है, मुझे लग रहा है कि ट्रेवल्स में एक ओम्बड्समैन का वो ऑप्शन होना चाहिए जो हमारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाए। इसमें हमारे जैसे जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, तो कुछ वो हो गए जो वेल एजुकेटेड लोग हो गए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, मतलब एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाए। तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम पर्सनली किसी को कुछ बोलते हैं, वो तो एक डिस्प्यूट बन जाएगा,
बट एक बॉडी इस तरह से बनाई जाए जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, चाहे उसमें लोकल एरिया के जो रिजाइडिंग लोग हैं, चाहे वो गलत हो या फिर टूरिस्ट हो, उनके मतलब कि इस चीज को एक रूल बनाने के लिए एक बॉडी ऐसी बनाई जाए कि वो इम्प्लीमेंट उनके थ्रू करवाई जाए। तो ये शायद एक बेटर वे होगा किसी भी चीज को, क्योंकि अब ये डिस्प्यूट ऐसे होंगे कि कोई कोर्ट में तो जा नहीं सकता है। मान लीजिए कोई गेस्ट आके यहाँ पे कचरा फैला रहा है, मैं उसको बोलता हूँ भैया यहाँ पे कचरा मत फेंकिए, बट वो क्या होगा कि एक डिस्प्यूट बन जाएगा। बट इसके लिए एक मतलब एक कमेटी या कुछ भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए हर जगह पे, जो ट्रेवलर और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट है या सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके बीच में एक ओम्बड्समैन का काम करे। तो ये शायद एक बेटर वे होगा किसी भी जैसे जो समस्या का समाधान करने के लिए। तो ये वे भी हो सकता है, हम कोई चीज है, कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या तो कुछ कोई भी टूरिज्म से रिलेटेड है, मतलब अभी हम इस टूरिज्म के बारे में बात करें तो मैं इसी पे आऊंगा कि इससे जुड़े हुए कोई भी लोग होंगे, चाहे वो सर्विस लेने वाला है या देने वाला है, उनके ऊपर जो हम अपने लोकल लेवल पे रूल्स बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस तरह से एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, ताकि वहाँ पे उस जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के इकोसिस्टम को, सस्टेनेबिलिटी को, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो बाकी अभी तक एग्जाम्पल तो कोई है नहीं ऐसा कि कहाँ पे हमने मतलब तो फ्रेंकली स्पीकिंग कि कोई ऐसी एक्सपीरियंस की लिया हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हर जगह पे कुछ ना कुछ वो तो रहता ही है, किसी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्लॉज रहते ही रहते हैं, बट इसमें ऐसा कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल है नहीं कि जिसको हम बताएं कि ये एक इस चीज़ को फुलफिल कर रहा हो। Shweta, there is a question from Ravi. Ravi, you can switch on your video and ask the question, please. So thank you for allowing me to ask question. Sorry, ma'am, my camera is but haven't. It's all right. It's okay. It's all right. You can ask your the question. Yeah. So I just wanted to ask regarding the waste management in the mountain areas. So back in 2016, Indian government launched plastic waste management rules and policy, right? Since after that, when they launched in 2016, they also launched one campaign where Indian Railways have got some machine where passengers can submit their plastic, and in reward they can get some liters of water, right? So Indian government came up with this plan, and back again after some years in 2018, Nestle worked on the Hildari project again. That is plastic, and most of the areas like Darjeeling, Himachal again. So why being the stakeholder in this tourism, what you think, how resorts and the local tourism service provider can collaborate with corporates in their CSR initiatives along with some NGOs, local NGOs there, and can get some solution, just like our plastic accepting machine, because Indian government have, and most of the NGOs work on it. So what's your thought in this on this topic? Okay. Ishita, we'll start with you again. What are your thoughts on this? How can corporates help, as part of their CSR responsibility, and in of course tandem with the NGOs who are working on ground? So yeah, so I mean, CSRs can play a huge role in this, from the setup of various systems, in Spiti as well, we are now looking at working, on setting up, we've set up actually, small basic refill facilities. In Spiti, we worked with a company called Lifestraw, where they donated us a few, Lifestraw filters at that point in time. But we're looking, they work pretty well, at the key tourist destinations, we set them up and they worked really well. And travelers were refilling as well, so we were thinking of upscaling that. So that is an area where corporates can easily get involved, in helping to sponsor or helping to set up, refilling facilities, or even, in terms of waste management. In terms of, I've seen, I don't know how successful the toilets are, but I have seen that Hira Lalji will be able to, better give insight on that in Manali. There are a lot of these mobile toilets, because one of the biggest challenges in most tourist destinations, and especially across Spiti, is lack of any kind of toilet facilities, and then that creates a lot of
guns and waste everywhere, the negative aspects, but even looking at how corporates can get involved in getting local communities involved. So like trainings of local communities in terms for them for creation of say homestays, as well as other livelihood opportunities. So there is a lot of space and areas where CSR can get involved in rural tourism and green tourism. Yeah. Tejas, what do you have to? Yeah. Yeah. So I think Ishita answered it perfectly. I don't know. There's not much to add, more to add on that. CSR plays a huge role in any sort of aspect, including tourism. And when it comes to environment, CSR has a huge initiative to play. And so there's a lot that can be done when it comes to tourism. And the main issue is the funding aspect, and that is where CSR comes in. So there's a huge role. There's lots of technologies, lots of research that can be done to improving, and so there's a huge role that can be done. So, Shweta, can I just ask one more question? It's for Tejas only, before we come back to Hira Lalji. So, from the wildlife perspective, there are a lot of companies, there are a lot of corporates who are working in this direction, but they are not really aware of the ground, the challenges on ground. So I'll just give you an example. There is a place called Nawabganj Sanctuary, which is between Lucknow and Kanpur, Unnao, and it was very well maintained. However, there were no takers, as in there were hardly any people over there who'd come to visit the place, and the prices of is just 20 rupees per head, the ticket prices, but still there were lack of people over there, that nobody wants to go to places like Nawabganj Sanctuary, and so the maintenance, the quality has come down. So from that perspective, from the wildlife perspective, what do you think the role of corporates over here could be? So I think when it comes to the wildlife sanctuaries, national parks, etc., the main role of corporates would be from the perspective, because when it comes to the entrance, the national park itself and the wildlife sanctuary itself, there is not much scope for any private entity. It is more so the government entities that are responsible for the upkeep of those regions. It is more so on the outskirts where there are, say, where the resorts come up, where the promotion of tourism, for promoting tourism and etc. That is where the private sector really plays a huge role. And over there, the main aspect in terms of these sensitive areas is to ensure, like very important, is to ensure that the local communities are extremely involved. And because they need to be brought into the loop, there needs to be practices set in place to ensure that tourism, because these are very ecologically sensitive areas, so they needs to be able to handle any sort of tourism that comes in. And one good aspect of, say, national parks is that there is a carrying capacity study that is done, and there is a limited amount of daily intake of tourists that can enter the national park in a particular day. So that is something that is very well taken care of when it comes to that. So in cases of these ecologically sensitive areas, the main role for the private sector would be ensuring that in the outskirts where the resorts are set up, that those are sustainable, they use the local material, local communities are involved, etc. Great, thank you. जब जो कंपनीज आती हैं, कंपनीज अपना जो CSR फंड से बहुत काम करवाती हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी और टूरिस्ट स्पॉट्स के रखरखाव के लिए भी। तो आपने ऐसा हिमाचल में क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या कंपनीज का CSR फंड्स काम आ रहे हैं सही से, और कंपनीज अपने CSR फंड्स किस एरिया में लगा सकती हैं, किस दिशा में लगा सकती हैं कि उससे ज्यादा फायदा हो लोकल एरियाज का टूरिज्म को लेकर के? देखिए, अभी तो जो ग्राउंड लेवल पे अपने सराउंडिंग्स में अगर देखें तो ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी जो मनाली या इसके सराउंडिंग में ऐसा है नहीं कोई जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हो यहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, या फिर यहाँ पे कुछ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, यहाँ का फ्लोरा फोना या जो भी है यहाँ पे उसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई चीज़ की हो। अभी तक तो कोई है नहीं यहाँ पे, बट सर्वेज होते रहते हैं। जैसे अभी मनाली का जो साथ में हामटा करके जगह है, उसमें भी एक अभी रिसेंटली सर्वे हो रहा था कि उसको वाइल्ड लाइफ में ऐड किया जा रहा है।
बट ग्राउंड लेवल में अभी तक 4-5 साल हो गए इनके सर्वे करने को, मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं रही है। तो अगर होता है ऐसा तो ये टूरिज्म के लिए तो बहुत ही मतलब एक प्लस पॉइंट रहेगा। इससे क्या होगा कि जो इस तरह का जो गेस्ट होता है जो अपना वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, यहाँ का फ्लोरा फोना, क्योंकि यहाँ पे जितने हिमालयाज में फ्लोरा फोना के ऑप्शन है या फिर वेराइटीज है शायद ही कहीं पे मिलेगी। तो अगर इस तरह का इनिशिएटिव किसी CSR कंपनी के द्वारा किया जाता है तो वो तो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हो जाएगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और हाँ जी, सेकेंडली क्या है कि फिर उसके साथ साथ में जो कैंपिंग हो रही है जैसे माउंटेन्स में, इस चीज़ के अगर मान लीजिए परमानेंट सेटअप्स बन जाते हैं कि एक फिक्स्ड टेंट सिस्टम हो गया, या फिर जैसे ट्रैकिंग तो यूजुअली होती रहती है, तो अगर बड़ी कंपनीज यहाँ पे इस तरह के इनिशिएटिव्स ले ले और एक जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में काम करेंगे तो ये चीज़ वर्क करेगी इसमें, और इससे टूरिज्म को ऑब्वियसली फायदा ही होगा। Abhi, in Yes, fact, just a Nancy, I have to while say back. something. Acha, Nancy, you had to say. Yeah. No, I tried same thing. अब हम उस टॉपिक से आगे आ गए हैं, but still, Ishita said something about Bhutan, right? So yeah, I think I can add something to it because I traveled there in 2016, and at that time there was, I think Bhutan is one country that doesn't promote tourism at all. They don't do it. They don't want people to come there. I have seen that, and that's why they are, making strict rules. Like when I traveled there in 2016, there was no rule like, अभी ऐसा है वहां पे कि चाहे आप इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, आपको एक पर डे का एक अमाउंट यू हैव टू देना होता है गवर्नमेंट को वहाँ पे। फॉरेनर्स के लिए तो द अमाउंट इज बहुत ज्यादा। लाइक आई हैव यूरोपियन फ्रेंड्स एंड दे ऑलवेज टेल मी दैट दे वांट टू ट्रैवल टू भूटान बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। So, whenever they want to travel to Asia, so they choose countries like India or Vietnam or something like that. बट अब जब मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया था तो वहाँ पे ऐसा उस टाइम पे कोई रूल नहीं था, कुछ भी नहीं चाहिए था, नो पासपोर्ट नथिंग, बस कुछ पर डे का कुछ टैरिफ नहीं था। बट अब वहाँ पे उन्होंने इतना फॉरेनर्स के लिए था उस टाइम पे भी, बट अभी इन दीज ईयर्स उन्होंने ये रूल बना दिया कि वहाँ पे दे डोंट प्रमोट टूरिज्म एक्चुअली। मतलब लाइक आई एम अ ट्रैवलर एंड मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें देखती रहती हूँ ट्रैवल रिलेटेड, तो उसमें कभी भी कंट्री लाइक सिंगापुर एंड some European countries also, like Italy and Spain, they promote tourism a lot. They want people to come there, even India. But Bhutan is one country I never see any post like any travel company promoting Bhutan, or the government doesn't want it basically. And when I travel there, the place is for sure it's completely different. I've been to many countries, but that was and the people there are very considerate about their country, and how travelers behave there. They're very considerate of it, and nobody litters there. वहाँ पे कुछ गंदगी वगैरह कुछ नहीं है उनका। ये है कि दे वांट टू जस्ट कीप इट लाइक दैट, वेरी नेचुरल। कोई ऐसे बिल्डिंग्स नहीं वहाँ पे, सब जो आर्किटेक्चर वगैरह भी है वो सब कुछ बिल्कुल सेम है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम मल्टी लेवल बिल्डिंग्स वगैरह, ऐसा वहाँ पे नहीं है। जितने भी मैंने वहाँ पे सिटीज और अलग अलग जगह ट्रैवल किया, तो दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि उन्होंने ट्रैवल को ही इतना प्रमोट ही नहीं किया जैसे हम। ऑफ कोर्स हम इंडिया भी बहुत प्रमोट करता ही है ट्रैवल को। सो मे बी दैट्स द रीजन उन्होंने रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर रखे हैं कि पीपल कांट गो देयर एंड डोंट गो देयर बेसिकली। दे डोंट, नॉट मेनी पीपल ट्रैवल टू भूटान. So yeah, that's what I feel, that and in India places like Uttarakhand and Himachal, and in the south, like अब लक्षद्वीप भी उसमें ऐड हो रहा है धीरे धीरे. So we kind of course it's the responsibility of travelers as well. And but yeah, there is one thing, like what I have seen is like whenever I travel in India, there are many places जहाँ पे डस्टबिन वगैरह नहीं होता है. सो अब आई हैव टू कैरी बैक माई लिटर, मेरे को अपने साथ ही लेके जाना पड़ता है. बट नॉट मेनी पीपल थिंक लाइक दैट. एंड आई वुड से कि इसमें गवर्नमेंट का भी
है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डस्टबिन नहीं होते हैं हर जगह, हर पार्क में नहीं होते हैं, एंड अगर होते भी हैं तो वो कभी टूट जाते हैं या जैसा भी। तो या इवन आई फील दैट कि ये सब चीज़ें जो है मैंने बाहर की कंट्रीज में और यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया है कि एक तो आई रियली फील दैट वी ओवर प्रमोट थिंग्स, सो आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दैट, बट on traveler part as well, I really feel that we have responsibility of keeping the place clean. हम we are adults, we are mature people. कोई बच्चा अगर गलती करता है तो फिर भी समझ में आता है, बट many people like educated हैं, सब कुछ है, but we don't follow rules. And I don't know कि उसको कोई एक अगर कोई ऐसी एजेंसी भी बना दी जाए तो वो भी enforce करवा सकती है या नहीं. I'm not too sure about that because it's we have to do the right thing. कोई Traveler हमसे behavior, forcefully she करवा said, right? सकता. Yeah, so Actually, that's there's what I think. these are जैसे two हीरा लाल जी ने बोला कि हाँ, we should have an ombudsman in place so Yeah. that कोई तो हो कि हाँ विजिलेंस रखने के लिए. That's a very important and very relevant suggestion that he's made. Yes, Shweta, back to you. Yeah, no, I was saying that these are two extremes that we are discussing. Like Nancy mentioned it, that India or probably many other countries, they over promote tourism. We are not ready to handle the kind of influx of tourists that we get. And there are countries like Bhutan who totally restrict it. She says that they don't promote tourism. I'd say that they manage the flow, or probably they limit the number of tourists that come to their country by raising this daily tariff. I've also heard about it, that for Indians it's not that much, but Yeah, for that's foreigners true. For it's India, yeah. fine. Uh-huh. For it's Exorbitant. So that's how they've maintained their probably ecology or architecture or cleanliness maybe. But we need to find that kind of balance. We cannot be like Bhutan and restrict the flow of tourism, because it's a huge part of our economy that simply cannot be done. And it has a lot of potential as well to create kind of jobs and businesses. And we are seeing in this case with Ayodhya, I was watching it on television that there were 5 lakh, what do you call them? The people who go for that darshan. There were 5 lakh pilgrims in one single day. So, and they are expecting 5 crore tourists to visit that city every year. So even if every tourist spends barely 1,000 rupees, I mean, this is a very, very small estimate. So you can imagine what that can do to that places or region's economy. So of course we cannot restrict it, but we need to be very, very prepared. I don't know if that city is as prepared or not, but yes. Anyway, we digressed a little, I think. We'll move on to the next question. Basically, when we are talking about tourist behavior, and even if we talk about business people who are entering into construction of hotels or are into the travel business, what are the benefits? I mean, if I am a traveler, what is I mean, why should I adopt green tourism? Just like I think Ishita said this, I'm here for a holiday. Why should I care? That's one thing. And also as a business person, if I want to open a hotel, is it financially viable for me, or is it actually more profitable than opening a traditional hotel? Is opening a green and sustainable hotel, will it ensure more profitability, or at least long-term profitability for me in the future? So I'm just coming to the cost part of it. I think that's the main hurdle that comes. So how can we address that? Anyone can go first. Ruchika, who do you think would be? We'll start with the Tejas. Yes, please. Yeah. So I think, it is a lot more the way that a person, say, building a hotel is incentivized to move towards a sustainable construction, is that as slowly people are becoming a lot more aware of sustainable tourism, slowly but steadily. And that is what they're going to be seeking out. They're going to be seeking out for ways in which ensuring that their tour is sustainable. And so that is the way that a person planning to build a hotel, he has to understand that this is exactly what my customer base is going to be looking out for, and therefore this is what I should go for. So that is how they have to. If you have to look at it from a pure economic standpoint or point of view, it is basically them understanding that this is what their customer base wants.
And what are the benefits for a traveler? It's, as simple as it is a lot more, it's a lot better experience if they are moving towards sustainable tourism. They're ensuring that it is good for them as well as for the future people that travel to the region. So that is the benefit that they have to look out for. And again, it's just all about coming from inside, about what they want to seek from sustainable tourism, from tourism. And that is the only way to incentivize. Ishita, what do you have to add to that? See, I think, for people to be incentivized to work towards, I mean, it depends on what model is being adopted and the context of the place as well. Over the long run, going green can become, profitable as well. Initial, there is a one-time investment, so maybe the government can help with providing some kind of like, subsidies or incentives, for people who go with, say, greener properties, like for instance, if you want to do solar electrification, solar backups, you know, there can be some kind of like a incentive that is provided, or a soft loan that is provided, interest-free loan that is provided to hotels that will go for something like this. That is very important to incentivize hotels and travel operators, or to start looking at these options. Otherwise, they will obviously look at what is cheapest for them. I mean, while the customer, it's going to take many years, in my opinion, for the customer to play an influencing role in, demanding stuff which is green. It might be a very small percentage right now, and they might only go for those particular boutique properties. But we're talking about lakhs and lakhs of tourists that visit destinations across India. Those lakhs of tourists are not looking necessarily for kya green hai, and I am willing to pay that little bit extra, to stay at a green property. They're looking at कि सबसे सस्ता मुझे hotel कहाँ मिलेगा. They will even haggle for 100 rupees, and so matlab, how do we then, I think the way to go is to go through the travel operators, the hoteliers, providing them incentives, maybe having also that, by this year you have to have XYZ things installed into your hotel. So making it kind of like a mandate, which then is incentivized by the government. So I think that would be the way to go to approach this. हीरालाल जी, आपका क्या कहना है इस पे कि क्या जो ट्रैवलर हैं वो इतना खर्चा करना चाहेंगे इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म पे, कि ये माइंडसेट में कोई चेंजेस आया आपके हिसाब से? मैम देखिए, अभी कुछ कर तो जो फाइनेंशियली वेल टू डू होंगे, जैसे मतलब, आर यू एबल टू हियर मैम? आपकी वॉइस थोड़ी सॉफ्ट है। हाँ जी, वैसे जो अगर तो फाइनेंशियली कैलकुलेशन करेगा बंदा, उस केस में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है फिर, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज जो ग्रीन टूरिज्म में है, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है तो वहाँ पे एरिया का जो जैसे रेशो होगा ग्रीन टूरिज्म में, मतलब उसमें एज कम्पेयर टू दूसरी बिल्डिंग्स जो मतलब टिपिकल होटल्स होता है, उसके कंपैरिजन में ग्रीन टूरिज्म में हमारा ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगा, ज़्यादा स्पेस मांगेगा, बट रेवेन्यू उस हिसाब से जनरेट नहीं हो पाएगा। तो अगर जनरेट रेवेन्यू नहीं हो पाएगा तो हमें कॉस्ट में इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ। और वहीं पे आती है फिर कैलकुलेशन की, अगर तो कोई मतलब खुद से प्रिपेयर्ड है कि दे आर इन फेवर ऑफ ग्रीन टूरिज्म, वो लोग तो इस चीज़ को बियर करेंगे, बट मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो ट्रैवल करने जाते हैं, दे आर वेरी कैलकुलेटिव, और वो सोचेंगे कि यार इस चीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया को उस चीज़ का बेनिफिट है, मतलब जहाँ पे वो घूमने जा रहे हैं वो अपना बेनिफिट पहले देखेगा। तो इसलिए ऑब्वियसली अगर कैलकुलेशन की बात आती है, विल गो विद द चीपर ऑप्शन। सो शायद उसमें जो बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ज़्यादा अमेनिटीज है, वो ज़्यादा चीप पड़ेगी उसको। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर भी उसी तरह से करेगा, जो इन्वेस्ट कर रहा है इज इन्वेस्टिंग फॉर बिजनेस, वो यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो दीज गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू वर्स, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मेरे 100 रूम बन सकते हैं, बट अगर मैं उसको दूसरी पॉलिसी के थ्रू जाता हूँ, मान लीजिए ग्रीन टूरिज्म के कंसेप्ट में जाता हूँ, मैं कॉटेजेस बनाता हूँ या हट्स बनाता हूँ, उसकी वहाँ से वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा जितना एक
100 रूम्स की प्रॉपर्टी से करेगा। तो दीज गाइज आर ऑल्सो वेरी कैलकुलेटिव। तो इसमें क्या है कि जो तो बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं, मतलब जो इन्वेस्ट करा वो बिजनेस पर्पज से ही आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शायद, इतना जल्दी ये चीज प्रमोट नहीं हो सकती है जो ग्रीन टूरिज्म का वो कंसेप्ट है। बाकी अगर होता है तो फिर वही है कि अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज को, लोगों को मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, क्योंकि अभी इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे वो। उनको पता है कि हमें अपने एरिया से लेना देना है, जहाँ पे घूमने जा रहे हैं दे आर नॉट सो रिस्पॉन्सिबल। और जो बिजनेसमैन है वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आया है कि उसने पैसा कमाना है। तो थोड़े से चैलेंजेस है इसमें यार। मिस्टर ही इज हियर, सो आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक इको टूरिज्म प्रॉपर्टीज जो है, आपको लगता है कि ट्रैवलर्स उस पे वहां पे स्टे करने के लिए ज्यादा स्पेंड करना चाहेंगे? ओके, चलो एक तो सबको पहले नमस्कार। मैं सॉरी बहुत लेट हो गया, पर मैं बात कर सबकी आपकी सुना, तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है आप लोगों का। और मैं थैंक्स करूंगा बेटा जी का, जिसने मुझे कनेक्ट किया आपके प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो बाकी को बात अच्छा है जो अभी आपका चल रहा है होटल वाइज अगर मैं अपनी मनाली की डेस्टिनेशन की बात करूं तो इको टूरिज्म के हिसाब से वहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुई है। क्योंकि वहां तो ऐसा है कि पहले बिल्कुल होटल नहीं थे, अब होटल्स बिल्कुल मशरूम की तरह उग गए हैं। तो जो कि अच्छा साइन नहीं है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी, बिल्कुल। जिस पर अभी भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। अब मैं बताऊं आपको, लास्ट 5-6 सालों से हमारा डेवलपमेंट प्लान कुल्लू का बना, कम से कम 6-7 साल फॉलोअप किया उसको, अब जाके फाइनल हुआ। लेकिन फाइनल होने के बाद भी जितनी हमने इनपुट दिए थे वो सरकार ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं करे। क्योंकि हमें 20-25 साल हुआ टूरिज्म में, और हर मीटिंग में मैंने, हर मीटिंग चाहे शिमला हुई चाहे कुल्लू चाहे मनाली, हर मीटिंग ज्वाइन करी मैंने गवर्नमेंट के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगे कि जो हम इनपुट दे रहे हैं कि भाई वो इनपुट तो ये अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, जबकि हम इकोलॉजिकल सब बैलेंस करने के लिए दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं वो उस तरीके से सोचते नहीं है। वो तो इस तरीके से सोचते हैं कि इनकी फाइल को हम कहाँ पर विराम लगाएं, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आई डोंट नो कि भाई कैसे हम इसके पार, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया 6-7 साल इनके साथ मीटिंग करके। जी। जब फाइनल में हियरिंग हुई तो उसके बाद दोबारा से हमने ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद हियरिंग में भी बुलाया गया। हियरिंग में भी मतलब अगर मेरे 10 पॉइंट थे, बड़ी मुझसे 2 या 3 पॉइंट झगड़ के करने पड़े हमारे को, कि नहीं ये तो होने ही चाहिए। बाद में क्या होता है ना, उसमें अगर हमने कोई पॉइंट बोला और बाद में जब टीसीपी में फाइल जाती है, वहां पर फाइल बन जाती है, प्रैक्टिकली में कुछ और होता है और थियोटिकली में कुछ और होता है। तो इकोनॉमिकल या इको बैलेंस के हिसाब से तो हमारा डीपी अभी भी नहीं बना, और हो सकता है शायद ऑल ओवर इंडिया में शायद इको के हिसाब से कहीं भी डेवलपमेंट प्लान नहीं बना अभी तक। वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए अगर प्लान बनेगा, मुझे लगता है जैसे हिल में 2-2.5 मंजिल से जो पहले हमारा था उससे ऊपर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब अगर बिल्डिंग 2-2.5 मंजिल में, तो उसमें जो हमारा इनकम सोर्स है वो मैच नहीं कर सकता है लोन पर। क्योंकि लोन जो लिया, अगर हम 2.5 मंजिल, तो उसमें हमारी इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि वो हम जो इंस्टॉलमेंट हमारी बनी है वो हमारा रीपेमेंट ही नहीं होगा। तो उस जैसे जो आईडीए स्कीम आपको पता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें 30% वो सब्सिडी देते हैं, पर वो सब्सिडी देने तक उससे डबल हम इंटरेस्ट दे चुके होते हैं बैंक को। तो बहुत सारी लीकेज है, बहुत सारी दिक्कतें है, पर चलो आस्ते आस्ते सोल्यूशन चल रहा है। पर जिस तरह के प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसमें ये हो सकता है कि ये चीजें अगर सही प्लेटफॉर्म तक जाए, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन करके 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम बॉल फेंकेंगे तभी वो कहीं गोल पहुंचेगा। तो मुझे लगता है बहुत चीजें इको को बैलेंस करने के लिए बहुत चीजें करना है, होटल इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी, बाकी हिरलाल जी ने, इशिता जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, तेजस जी ने, तो दे आर ऑल इंक्लूडिंग दैट। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू श्वेता। यस, we are actually at the end of our discussion. अभी क्योंकि लास्ट के हमारे 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं, what I want all of the participants, मैं चाहूंगी कि सारे participants they give a kind of closing remarks as to अभी
इंडिया के लिए, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो व्हाट आर द say three top priorities that the government should prioritize टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या टूरिज्म को मैनेज करने के लिए. लेट्स यूज द वर्ड मैनेज. आई नो हर रीजन के लिए अलग अलग हो सकता है, बट आपकी नजर में, बिकॉज सिंस यू ऑल आर फ्रॉम द ट्रैवल इंडस्ट्री, if you had to give suggestions to the government, the three things that they should be implementing or prioritizing, वो क्या होंगी? So I'd just like to go one by one. Tejas, we'll start with you this time. You can take a minute to think, and what recommendations would you like to give to the government in how to harness the potential of tourism for India, and also how to manage the influx of tourists? Yeah, so I think so. Two of the things we have already discussed during the discussion, but just as concluding, I'll summarize. One is the carrying capacity aspect, where when promoting tourism in a certain region, there needs to be a carrying capacity study being conducted so that we understand and ensure that the region is capable of dealing with the tourist flow. One is that, and second is there needs to be proper implementation of the sustainable tourism criteria of India, the STCI, which was introduced in I think around 2016. It is there in the sustainable tourism plan of the country as well, and also now which was launched in September of last year, the Travel for Life, under the whole life scheme, where they're creating all of these criteria. There's a whole sustainable tourism indicators for each and every different aspect, from construction to tourists to water, waste management, electricity, etc. There are several indicators to the sustainable tourism criteria. And I think that is something, if mainstream, would have a huge impact. And it is, while slightly difficult to implement such a thing, to bring in certain criteria and ensure that they are being implemented, I think if these policies and schemes that are already put in place are properly implemented and brought to effect on the ground level, I think that itself would have a huge impact on the tourism industry and making sure that they are more sustainable. Mr. Budhi Prakash has to say something first. जो अभी तक मैंने सुना सब लोगों से, तेजस है, इशिता जी हैं, या आप लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है, लाल जी ने, तो इसमें जो तीन बातें बोल रहे हैं आपने ना, जैसे अभी तेजस जी ने बोला कैरिंग कैपेसिटी, और मैं मनाली के बारे में बताऊं, मनाली में एनजीटी में केस लगा था, उसका कैरिंग कैपेसिटी का सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे जब टीम आई तो उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस कौन है? हम लोग ही हैं. तो मनाली में जो म्युनिसिपल कमेटी है उसमें पैर रखने को जगह नहीं है, और उन्होंने फाइनल क्या किया, एमसी एरिया में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जबकि मनाली के रेडियस में कम से कम 5-7 किलोमीटर में ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रही है. हम चाह रहे थे 5-7 किलोमीटर का रेडियस में इस पे बैन लगाया जाए, जो सही होगा. हाँ, हो सकता है, मेरे 3 होटल्स हैं, मैंने 3 होटल में, जिसने नहीं बनाया है उसके लिए, बेचारे के लिए, उसने अगर बनाना है तो उस तरह का एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि भाई जिस तरह का ये है. लेकिन कैरिंग कैपेसिटी को भी मैनिपुलेट किया गया एरिया में. तो ये जो टीसीपी डिपार्टमेंट हमारे हैं, जैसे हिमाचल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, मैंने तो एक इसको नाम ही दिया, पहले टाउन बसता है, फिर कंट्री बनती है, उसके बाद प्लानिंग वाले आते हैं कि भाई ये छज्जा बड़ा आ गया, ये पार्किंग नहीं रखी आपने, ये रोड छोटा कर दिया. अंडरस्टैंड? तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं. इसके लिए हम लोगों को, पब्लिक को ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई होती है. इसमें हमें सब्र रखना पड़ेगा, अपने पैसे खर्चने पड़ेंगे, आपका समय भी देना पड़ेगा. तो ये सब है. एक तो ये टाउन प्लानिंग, एक जो गार्बेज वाला, जो पहले आप लोगों ने डिस्कस लिया गार्बेज पर, जैसे हीरा जी ने बोला था कि जैसे ही मतलब आते हैं, जो जैसे एमसी एरिया, पंचायत एरिया, वही एजुकेट करें, या जो ट्रेवल एजेंट है जो आइटनरी देता है गेस्ट को, वो एजुकेट करें. जैसे इशिता जी ने भी बताया था कि भाई जैसे फॉरेन वाले आते हैं तो वो सारा इस चीज को, तो वो हमें, हमारे इंडिया में तो हमें डंडा चलाना पड़ेगा. मैं 2-3 साल से ये बोल रहा था मनाली में, जब भी मीटिंग हुई हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो हम चाह रहे थे जितने भी टैक्सी, जितने भी कैब्स हैं कमर्शियल, उसके बैक साइड में और फ्रंट में 2 जगह एक बैग लटकाया जाए. जितने भी गेस्ट आते हैं वो गार्बेज उस बैग में, और शाम को जिस भी होटल में जाते हैं उस होटल में वो गार्बेज को ड्रॉप करे ड्राइवर. लेकिन प्रैक्टिकली में हो नहीं रहा है. आरटीओ को बोला, डीसी साहब को बोला, पता नहीं अभी कहाँ फंसते हैं ये लोग, मुझे नहीं समझ आता है ना, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेवल कर रहा है
कैब्स में। अगर मान लो, या तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको करे कि भाई ये मैंडेटरी है, इसके बिना अगर होगा तो गाड़ी का चलान होगा। एक ये गार्बेज वाला होगा, एक टीसीपी वाला हो गया। एक जो सीएसआर के फंड की बात कर रहे थे आप, अब पता नहीं सीएसआर में क्या कंडीशन है। हमारे यहाँ सीएसआर में जो फंड होता है वो सब मेलों में लगता है। कोई भी मेला आएगा या कोई कुछ होता है, उसमें वो प्रेशर डालते हैं सरकारी लोग कि भाई यहाँ ये हम मेला करवाना है, कोई ब्लड डोनेशन कराना, कुछ करना है, उसमें पैसा दे दो, कर दो। तो अब सीएसआर का मेन क्या फंडा है पता नहीं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। अगर टूरिज्म के लिए तो शायद सीएसआर का भी यूज नहीं हुआ इस बार। हाँ, इस बार जैसे हमारा फ्लड आया था उसमें मेक माई ट्रिप ने लगभग मेरे 7-8 करोड़ का फंड दिया मनाली। उसमें एक उन्होंने ब्रिज दिया और 5 करोड़ का उन्होंने जो टेंट टूंट ये वो दिए थे उन्होंने इस बार दिया। अच्छा फंड दिया जो हमें दिखा। बाकी फंड तो नेचुरल, जैसे जो लग रहा है, जिसका नेताजी को लगा तो उसको दे देंगे, अगर ब्यूरोक्रेट्स का लगा तो आज यहाँ जरूरत है वहां दे देंगे, तो बहुत मिसमैनेज है। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे नेस्ले ने हिलदारी प्रोजेक्ट लिया था, वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, और बहुत सारे और है जो ये वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, लेक रेस्टोरेशन, और उसमें भी करते हैं काम। तो उन तक आपकी बात जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ऐसा कहीं कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल हम एग्री रहेंगे, हम तो करना चाहेंगे। पर मनाली में बहुत बड़े कॉर्पोरेट कोई नहीं है अभी। होटल्स चेन में अभी जैसे हाईवे बना हमारा, लेकिन लास्ट ईयर फ्लड में हमारे को काफी नुकसान हुआ। 4 महीने हमारा टूरिज्म बिल्कुल ठप हो गया। और जो सोशल मीडिया पर चलता है उसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं करता है। एक ही वीडियो 100 बार चलता है, 1000 बार चलता है, 2000 बार चलता है। हल्का सा बारिश हो तो वो पुराना वीडियो ही होता है, पर गवर्नमेंट भी कभी एक्शन लेती है। हमने 2-3 बार नेशनल मीडिया पर मतलब मैं ना, जैसे न्यूज में आता है, एक बार मैं न्यूज में ही कॉल किया, मैं बेंगलोर में था और मनाली का दिखा रहे हैं बिल्कुल सारा सड़क जाम है, पानी जाम है, इंडिया टीवी में। और मैंने उनके कॉल सेंटर में कॉल किया और पूरा रिकॉर्डिंग बाद में चलाया मैंने। और वो बोलते नहीं हमारी न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है। बाहर बोले, मैं कहा भाई मैं मनाली का हूँ, सब पानी ठीक है, बिजली सब कुछ ठीक है। तो मतलब इतना बुरा हाल है। और वैसे हमने एक बार एसडीएम के पास जाके कंप्लेंट दर्ज की, जो इनका एनबीए है उसमें कॉल किया, मैसेज किया, मेल किया, सब कुछ कर चुके हैं हम। लेकिन ये सब कहानियां हैं कि भाई यहाँ अगर न्यूज आ रही है आपकी तो ये गलत है, तो आप यहाँ मेल कर दीजिए। वो 2-3 दिन तक फॉलो नहीं होते, तब तक तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। मीडिया बहुत सारे गैप्स हैं। हाँ, बहुत सारे गैप्स हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एग्रेसिव होनी, तो गवर्नमेंट की बात ही सोचती है। हम जितना मर्जी बोले हमारी बात कोई नहीं सुने। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को बहुत एग्रेसिव काम करना पड़ेगा, पर वो नहीं होता है। थैंक यू। Ishita, coming back to you. What are your suggestions? Can I request you to just repeat the question, because the internet at my end was just very flaky, so I couldn't really hear. I had asked that because we're wrapping up, so we said that in a sort of concluding remarks, if you had to give 3 suggestions to the government, what are the top priority? What are the 3 areas that the government should prioritize? If you just had to say 3, so what would those points be that the government should focus on related to tourism? Well, yeah, related to tourism, I think one of the biggest problems is waste. So we have to look at it in terms of waste management as well as waste reduction. So waste management के तो पता नहीं कितने अच्छे हाल है। मतलब हिमाचल में तो ज्यादा वही नदी में जाता है तो वो बह जाता है तो दिखता नहीं है, पहाड़ों के पीछे जाता है तो दिखता नहीं है वहां पर, बट बहुत प्रॉब्लम है ना। और तो one is that waste management has to be done in a proper way. It's not that it can't be done. If there is a will, that can be done, right? The other thing is waste reduction also. Right. I mean, there have been times when there's been talk of banning of plastic bags and all of that, but after a few months, a year or so, it all comes back, Likewise with bottled water also, I think if there is a proper concerted effort to again, incentivize maybe people to set up refill facilities, and like every hotel must have, like a refill facility. This should be like over a plan over a few years, where you have like a standardized water filter system. And across all the hotels,
and it should become a mandate. And then gradually you start taxing plastic water bottles. So it becomes a disincentive for people to buy bottled water, just from the economics of it. Don't like, it's hard to say, okay, I'm banning plastic water bottles, that's not going to work really well. And if you're looking at banning also, then you should have an option which is very widespread. But I think you can tax it. So the cost becomes high. While on a refilling system, the cost is lower, But again, management of these refilling systems is very important so that टूरिस्ट इज कॉन्फिडेंट कि जो पानी मैं पी रहा हूँ ये क्वालिटी वाटर है, रिफिल सिस्टम्स लग चुके हैं बट लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां कोई मेंटेनेंस नहीं है। और आप एयरपोर्ट में जाओगे और वो रिफिलिंग सिस्टम आप यूज करोगे क्योंकि आपको लगता है कि एयरपोर्ट का सिस्टम जो है अच्छी तरह से मैनेज्ड है तो यहाँ का पानी साफ होगा। बट कहीं बाहर पे रेलवे स्टेशन में जाके तो मतलब यू विल थिंक ट्वाइस, या बस स्टैंड में यू विल थिंक ट्वाइस, या जो फिर यहाँ पर आई थिंक मनाली मॉल में भी कुछ लगाया था, आई डोंट नो वो कैसा चल रहा है, वो हीरा लाल जी एंड बुद्धि प्रकाश जी विल नो बेटर, so it has to be like in terms of management, in terms of reduction, how can we reduce things, and proper stringent systems have to be in place। ये नहीं कि मतलब वही जैसे आप बोल रहे थे सरकार का तो मतलब अपने ही है, मतलब कागजी कार्रवाई में ही चलता है मोस्टली, and files में रह जाता है। Implementation is very very important along with, like I said, like I think hotels play a huge role, tour operators play a huge role in influencing and making sure that travelers follow a certain system। जैसे आप बोल रहे थे बुद्धि जी की मतलब टैक्सी वाले इन मनाली तो उनका बहुत वो होता है वहां पर से, एंड देयर इज मोस्ट ऑफ द बिजनेस फ्लोज थ्रू द taxi union, and if they all have some kind of a garbage system in place in the gadi only, it can prevent a lot of garbage being strewn all over the mountainsides, and the taxi operators themselves are trained कि भाई अगर आपको ये इंश्योर करना है, नहीं तो आपका ही बिजनेस इवेंचुअली इफेक्ट होगा इन द लॉन्ग रन, कूड़ा देखने कौन आएगा, right? Or and this year has been a prime example, मतलब ठीक है, we can't say that because of increase in number of tourists हमें बर्फ नहीं मिली है हिमाचल में, I mean it's a much larger global issue, but there is a connect to it also at a micro level, but so I mean it's important, मतलब our tourism business is dependent on, especially in the winters, is dependent on बर्फ, इन द समर्स इज डिपेंडेंट ऑन दैट वो रोड खुला रहे कि ये मीडिया जैसे आप बोल रहे थे बुद्धि प्रकाश जी, मतलब मनाली तो छोड़ो पूरा स्पीति खत्म कर दिया हमने स्पीति भी कोई नहीं आया, सो आई मीन हिमाचल दिस वाज वर्स देन कोविड, बिकॉज कोविड में तो चलो सब लोगों ने बंद कर दिया, स्टाफ भेज दिया, बट यहाँ पर तो मतलब यू हैड ऑल योर स्टाफ, यू हैड टू कीप पेइंग देम एंड देयर वाज नो टूरिस्ट, सो इट वाज वर्स देन अ कोविड ईयर फॉर हिमाचल प्रदेश दिस ईयर। So yeah, again, the government plays a huge role in this, in ensuring, because the media is just looking for सनसनीखेज का कुछ मतलब कि आइटम, अब देखो ये फ्लड हो गया, अब देखो ये हो गया, उनको तो न्यूज आइटम चाहिए और वो एग्जैजरेट करते हैं, so yeah, so I think I would say that these are some of the crucial things that need to be looked at। Right, हीरा लाल जी आप भी एक बार बताएं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब भी टूरिस्ट आ रहा है तो सबसे पहला जो उसका यहाँ पर आने का जो सोर्स होता है, जैसे कनेक्टिविटी हो गई, वो सबसे पहले बेटर की जानी चाहिए किसी भी प्लेस पे जहाँ पे जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हमारे अगर कुल्लू मनाली की बात करें तो यहाँ पे एयर फेयर्स इतने कॉस्टली है कि शायद ही वर्ल्ड के किसी डेस्टिनेशन में इतने छोटे स्पैन के लिए इतना कॉस्ट किया जाता होगा। तो हम तो गवर्नमेंट से यही फेवर करेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे पहले इन चीज़ों को बेटर किया जाए, रेट्स बेटर किया जाए ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए, कोई भी जो भी कनेक्टिविटी के सोर्सेज है वो बेटर किए जाए। सेकेंडली क्या है कि हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे करोड़ों का रेवेन्यू डेली जनरेट होता है, तो उस जो रेवेन्यू को जनरेट हो रहा है, जो टैक्स है या फिर कंजेशन फी बोल दिए आप, या फिर ग्रीन टैक्स हो गया, जिस भी प्रोसेस के थ्रू पैसा इकट्ठा किया जाता है वो उसी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट में लगाया जाए, वहाँ की ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए, या जो वहाँ का इकोसिस्टम है, फ्लोरा फौना जो भी है उस चीज को मेंटेन करने के लिए लगाया जाए। सेकंड सजेशन ये है। और थर्ड सबसे डिफरेंट सजेशन मुझे ये लग रहा है कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। वो किसी अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज के लिए छोटी सी बात को इतने तरीके से दिखाएंगे तो उसका क्या है कि एक पोस्टमार्टम होना चाहिए
उसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे कि ये क्या चीज है और ये कब की सिचुएशन थी और प्रेजेंटली क्या है, मतलब उस चीज की, नहीं तो एक बड़े लंबे टाइम तक उस चीज का एक गलत इम्पैक्ट जाता रहता है। क्योंकि अब जो टूरिस्ट आउट ऑफ एरिया है उनके माइंड में कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली जो मनाली में फ्लड की सिचुएशन आई हुई थी, अब वो कब की रिजॉल्व हो चुकी थी, कनेक्टिविटी आ चुकी थी, बट वो ही मतलब कि हमें गेस्ट के कॉल आते थे कि भाई आप लोग जिंदा हो, उनके ऊपर ये इंप्रेशन था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है एक क्रॉस चेक होनी चाहिए ताकि एक एग्जैक्ट पिक्चर, क्योंकि ना ही तो न्यूज ना ही कोई और चीज इस चीज को एग्जैक्ट दिखाती है। तो एक ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनना चाहिए जो इस चीज को क्रॉस चेक करके जो मतलब एक्चुअल पिक्चर है प्रेजेंट टाइम की, उसको साथ साथ में अपडेट किया जाए। तो ये 3 सजेशन आई थिंक मोर देन फ्रॉम माय साइड। या Thank you. Yes, Shweta, Yes. your concluding remarks. Yes, no, actually, it was, we are actually concluding on time. I'm surprised, but it was a very fruitful discussion. We had, especially in the last part of the discussion where we were talking about suggestions, it was a sort of crystallized recommendations that you gave. Budhi ji has to Budhi ji, add yes, sir, something. please. दो चीजें अभी मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ईशिता जी ने बोला ना कि भाई वहाँ की एसोसिएशन सब कुछ करना मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट बोला ईशिता जी ने कि वहाँ की जो एसोसिएशन हैं, चाहे ट्रेवल से हैं चाहे होटल से हैं, वो बहुत चीजें कर सकते हैं। जिसका मैं आपको उदाहरण दूं, जब फ्लड आया था तो उसमें हिलाल जी और हमने क्या किया, आपने अगर पब्लिक ट्रस्ट देखा होगा, मनाली से मतलब कुल्लू से मनाली के बीच में 13 पॉइंट थे जो डिस्ट्रॉय हुए थे फ्लड के कारण, और NHI ने 2 महीने लगाया उसको सिंगल वे करने में। और हमने पूरा फॉलोअप किया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, NHI से बात करी, उनके जो ठेकेदार है उनसे बात करी, गावार। उसके बाद उसने गणेश को दिया कंस्ट्रक्शन, उसको बात करी, सारा निचोड़ निकाला, सब कुछ निकाला। तो हमने ये पैरामीटर बनाया कि उनके पैरामीटर के हिसाब से कि ये रोड कितने दिन में बनने चाहिए। और वो बोलते हैं इतनी मशीन लगी है पर हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा 15 दिन में कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा इतनी मशीनरी इतने बंदे चाहिए। और हमने उसको फोकस किया और हमने इनिशिएट किया। पहले दिन मैं, हिलाल जी और मेरे कुछ टीम वर्कर 8 लोगों ने स्टार्ट किया डंगे देने खुद NHI के ठेकेदारों के साथ। और आस्ते आस्ते कुंभ बढ़ती गया, 50 लोग, 80 लोग, 100 लोग हो गए। और हमने 10 दिन काम किया। 10 दिन के बाद 12 दिन में उन्होंने वो 13 पॉइंट जो है 12 दिन में डबल लेन कर दिए। जहां हर पॉइंट में 2 पुलिस वाले लगे थे, पूरा दिन धूल खा रहे थे, जो 2 महीने से नहीं हो रहा। और वो न्यूज उसमें ABP न्यूज में पब्लिक ट्रस्ट में पूरा आया। उसके बाद जो प्रेशर पड़ा उनको, और उन्होंने पूरी लेबर लगाई, पूरी मशीन लगाई, हमने फॉलोअप किया, मतलब 12 दिन में किया। तो बिल्कुल शीजा जी ने ठीक बोला, जब तक वहां के लोग या वहां की संस्थाएं इस तरह की एक्टिविटी में एक्टिव रोल नहीं प्ले करें तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो एयरफेयर वाला बोला, जैसे इन्होंने हीरालाल जी बिल्कुल सही। इंडिया, ये जो हमारा कुल्लू दिल्ली कुल्लू एयरफेयर है, ये सबसे कॉस्टली है वर्ल्ड में। 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है और मिनिमम फेयर 8,000 से 23, 24, 26, 27,000 तक आता फेयर वन वे का। और उसमें आपको जानकर मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, टाइम सुन लूंगा आपको क्योंकि आप बोलते टाइम, हम टाइमली कंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बढ़ा नहीं, कोई देता हूँ बात टाइम आपका। नहीं। तो ये उसमें क्या होगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या PMO ऑफिस से एक कमेटी बनी एयरफेयर को कंट्रोल करने के लिए। उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। उनकी कमेटी के चेयरमैन 100 से एक MP थे, राज्यसभा मेंबर। मेरे को 2 दिन पहले पता लगा कि परसों मीटिंग है। मीटिंग के लिए मैंने कॉल करा, उन्होंने कॉल उठाया, मैंने उनको फीडबैक भेजा, विद स्क्रीनशॉट सब कुछ एनेक्शन लगा के, और 2-3 बार फॉलोअप किया, नो रिप्लाई। चेयरमैन जो एयरफेयर के लिए बनाए हैं उनका नो रिप्लाई। कैन यू बिलीव, रिकॉर्ड है मेरे पास। उन्होंने मेल ID खुद दिया कि इसमें डालो, हम इसको डिस्कशन में डालेंगे। उसके बाद फॉलोअप लेना चाह रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। और जो तीसरा जो सोशल मीडिया वाला, बिल्कुल हेला जी ने बिल्कुल सही बोला। सोशल मीडिया के जैसे RTI, अगर बार बार हम एक ही RTI में, तो जज क्या करता है, उसको फाइन लगाता है। इस तरह का इसमें भी एक फाइन मैकेनिज्म होना चाहिए। और जो वीडियो डालता है उसमें टाइम, डेट, किस जगह का एग्जैक्ट है, वो हर टाइम फ्लैश होना चाहिए, ताकि जब जो वीडियो सर्कुलेट हो उसमें लगे कि ये इस दिन का, इस जगह का, इस समय का है। क्योंकि जब तक उस वीडियो में टाइम, डे और प्लेस नहीं होगा तब तक वो कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बहुत ही important और relevant आपने points हाँ, उठाए, this is बिल्कुल। something that we should also take note that कोई भी चीज और टूरिज्म के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही कि टाइम एंड डेट अगर फ्लैश नहीं हो रहा है तो then it can be misused anytime. Anyway, so coming to the conclusion, we discussed a number of points. We talked about the challenges that are there. We talked about the policies that are there and how important it is to look at on-ground implementation. We talked about carrying capacity, waste management. These are the discussions that we had. And these are merely, it's a beginning. It's basically, these are indicators where we need to focus. And we as a media platform would try to focus on these areas, to write more about these areas, to advocate more on these areas. So once again, I'd like to thank each and every one of you who joined us. Thank you for taking out the time and wish you all the best. Thank you.